Hello everyone, welcome back to our channel Learning Untangled. Today we're going to start with exercise 12.2 of your NCERT book. So this exercise basically talks about volumes. So we'll be talking about volumes of different 3D figures. So before we dive into the exercise, let's quickly do a revision of the volume formulas for these solids here. So let's start with the first figure that we have, which is a cube. So what is the volume of a cube? If the side is A units, so the volume of the cube is A cube. Very good. Next, we have a cuboid. If the length is L, breadth is B, and height is H, what is the volume of the cuboid? It is L into B into H. Good. Next, we have a cone. So what is the volume of a cone? It is 1 over 3 pi r square h. Okay, what is the volume of a cylinder? It's pi r square h. Volume of a sphere is 4 over 3 pi r cube. And volume of a hemisphere is volume of a hemisphere is 2 by 3 pi r cube. Okay, so these are the formulas for volumes of different solids. So now let's start with the first question that we have in our book. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeters. And the height is equal to the radius. Okay, चलिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं. हमारे पास एक हेमिस्फेयर है. This is the hemisphere. इसके ऊपर we have a cone. So this is kind of the figure. हमें given है radius दोनों का same है, which is what? Which is 1 centimeters. And height of the cone is also equal to the radius. So the height is also what? It is 1 centimeter. So this is 1 centimeters. So we have to find the volume of the solid. Okay. अब जब हम वॉल्यूम की अच्छा अभी तक हमने पिछले एक्सरसाइज में क्या किया था, हमने सरफेस एरियाज की बात की थी. तो जब भी दो सॉलिड्स ज्वाइन करते हैं, उनके तो बीच में कुछ जो सर्फेसेस हैं वो हाइड हो जाते हैं. तो जो टोटल फिगर का सरफेस एरिया है वो इंडिविजुअल फिगर्स के टोटल सरफेस एरिया से डिफरेंट होता है, राइट? वो हमें देखना पड़ता है कि कौन से सर्फेसेस शो हो रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है. लेकिन वॉल्यूम्स में इट इज काइंड ऑफ इजी. अब दो शेप्स है, हमने उनको कंबाइन भी कर दिया तो उनका वॉल्यूम जो है क्या होगा? इंडिविजुअल जो शेप्स है उनके वॉल्यूम का सम. ओके, वैसे ही अगर मेरे पास एक बड़ा सपोज कोई सॉलिड है, उसको मैंने मेल्ट करके स्मॉलर पीसेस बना लिया, तो अगेन वॉल्यूम ऑफ द बिगर पीस विल बी इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द स्मॉलर पीसेस. सो वॉल्यूम दो चीजों का मतलब एक को मेल्ट करके दूसरा बना दिया या ज्वाइन कर दिया तो वॉल्यूम सेम रहता है या ऐड हो जाता है, तो वॉल्यूम्स में ज्यादा चेंज नहीं होता. ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में टोटल सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, तो टोटल सॉलिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू the volumes of individual shapes. So we'll write volume of the solid will be equal to volume of cone है हमारे पास, प्लस दूसरा शेप क्या है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. इजी. पूरा सॉलिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल शेप्स के वॉल्यूम्स का सम. सो लेट्स सी, कोन का वॉल्यूम हमने स्टडी किया था, इट इज 1 over 3 pi r square h प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम इज 2 over 3 pi r cube. यही है. चलिए लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. क्या है हमारे पास? 1 over 3 pi r is what? 1 square into h is again 1, plus we have 2 over 3 pi r is 1 का cube. So 1 by 3 pi
1 square times 1, that is just 1. So 1 over 3 pi plus we have, यहाँ पर भी हमारे पास क्या बचा, 2 by 3 pi. 1 by 3 pi plus 2 by 3 pi क्या बना, 3 pi by 3, which is nothing but 3 cancel हो गया, pi units. तो हमें वॉल्यूम निकालना था इन टर्म्स ऑफ पाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब. सो दैट्स योर आंसर. इजी. Okay, let's move on to the next question that we have. Rachel is an engineering student and was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its two ends by using aluminium sheet. Okay, तो एक रेचल ने एक मॉडल बनाया जिसका सेंटर में एक सिलेंडर है और साइड में दो कोन्स अटैच कर दिए. डायमीटर ऑफ द मॉडल is 3 centimeters and the length, okay, चलो हम फिगर बना लेते हैं पहले. So suppose ये मेरे पास सिलेंडर है, इसके दोनों साइड्स पे रेचल ने कोन लगा दिया है. अब हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है ऑफ द मॉडल. दोनों साइड्स मतलब सेम रेडियस है हमारे पास. डायमीटर अगर 3 सेंटीमीटर्स है तो रेडियस क्या हो जाएगा, इट वुड बी 3/2 सेंटीमीटर्स. एंड इट्स लेंथ, हमें टोटल लेंथ गिवन है और वो कितनी है, टोटल लेंथ इज गिवन टू मी, इट इज 12 सेंटीमीटर्स. इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर्स, इंडिविजुअल कोन की दोनों की हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर्स एंड यहाँ पर भी क्या है, दिस इज 2 सेंटीमीटर्स. तो यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड. ओके, चलो पहले बेसिक्स की बात करते हैं. वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल कितनी होगी, अब कितनी एयर होगी, इट विल बी इक्वल टू, जितनी उसमें जगह है, इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द राइट कोन. राइट, तो वॉल्यूम्स के केस में मैंने बोला था इट्स इजी. so this is of volume of cylinder प्लस दोनों कोन सेम ही है तो वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट कोन प्लस राइट कोन, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कोन. राइट, चलिए देखते हैं अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, इट इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम्स कोन का वॉल्यूम क्या होता है, इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब थोड़ा सा ध्यान से, रेडियस तो दोनों का सेम है लेकिन हाइट्स में डिफरेंस है. तो अगर इसका हाइट स्मॉल एच है, लेट्स अज्यूम कि कोन का हाइट हमने कैपिटल एच है लिखा है. अब वैल्यूज की बात करते हैं. पाई को भी पाई रहने देते हैं. वी हैव पाई आर स्क्वायर. व्हाट इज द रेडियस फॉर द सिलेंडर, इट इज 3/2 का स्क्वायर टाइम्स एच. अब सिलेंडर की हाइट क्या है, हमें टोटल फिगर की हाइट गिवन है. सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, टोटल फिगर में से ये दोनों साइड पे कोन की हाइट्स माइनस कर दी, तो दोनों साइड पे 2 2 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 8 सेंटीमीटर. सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 8. सो लेट्स पुट दैट हियर 8. प्लस वी हैव, इसको मैं लिख देती हूँ 2/3 पाई आर स्क्वायर. अब रेडियस, अगेन रेडियस इज द सेम, सो विच इज 3/2 का स्क्वायर टाइम्स एच. नाउ दोनों कोन्स की हाइट क्या है, इट इज 2, सो इट विल बी. चलो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. व्हाट डू वी गेट पाई times 3 square is 9 over 2 square is 4 times 8 plus 2/3 pi 3 square 9/4 again times 2. So this 4 here and 8 they get cancelled. यहाँ पर 2 1s are 2 2s are 3 1s are 3 3s are. So what are we left with? We are left with 18 pi plus we have 3, एक सेकेंड, ये 2 एंड ये 2 भी कैंसिल हो जाता है.
So we're only left with this 3 pi. So 18 pi plus 3 pi, we have 21 pi. अब pi की value हम substitute कर देते हैं. So we have 21 times 22 by 7. 7 ones are 7 threes are. So 3 times 22 is 66. And ये volume है, so units would be centimeter cube. So this is the volume of the air in the bottle.